हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एविकेस एकेडमी। आज हम इस क्लास में एसेस, कुछ इम्पॉर्टेंट एसेस हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका पेपर 2 के लिए। मैंने पहले भी कहा था आपसे, आपका जो भी पेपर 2 का लेक्चर सीरीज होगा वो आपको पेपर 1 का ही एक तरह से रिप्लिकेशन लगेगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर टॉपिक, एवरी टॉपिक will be either a direct or indirect replication to your paper 1. So I have already been guiding you, alarming you, mentoring you, saying that all the paper 1, if you are thorough with your paper 1, मान के चलो आपका पेपर 1 बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, मान के चलो आपका पेपर 1 का टेस्ट सीरीज वगैरह में आपका ऑलमोस्ट 80% स्कोरिंग आ रहा है, इसका मतलब आपका कंटेंट इनबिल्ट है। समझ गया? ये एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट से ये पॉसिबल होगा। एंड मैंने ये भी कहा था आपसे, ये CAPF का जो पेपर है, CAPF का एस्से जो है वो मात्र 300 वर्ड्स का ही है। व्हेन इट इज़ ओनली फॉर 300 वर्ड्स, देन अल्टीमेटली ऑब्वियसली आई वांट यू पीपल टू मोर एंड मोर फोकस ऑन फैक्चुअल्स, दैट टू इन एन एनालिटिकल बेस्ड फैक्चुअल्स आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आज एक ही टाइटल हम समझते हैं, दैट इज द टाइटल विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना? आपसे सीधा सीधा कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछते नहीं है, लेकिन आपसे सवाल कुछ इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल टाइटल्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे अर्थ इज ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड। ठीक है ना? मान के चलो एक टाइटल आ जाता है, अर्थ इज फॉर ऑल प्रोटेक्ट इट, सर अर्थ इज ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड, या फिर कुछ इस तरह से टाइटल, वी आर ऑल द पार्ट ऑफ अर्थ। सपोज यू गेट अ टाइटल लाइक वी आर ऑल द पार्ट ऑफ अर्थ, एनी टाइटल। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू मोर एंड मोर एलॉबरेट on one important discussion that is in regard, that is in respect to something called sustainable development. So what is sustainable development? Try to understand first of all. The concept of sustainable development is something where we say the development today, whatever we are developing today, the development today must not impact the future. Again I repeat, sustainable development means the development today should not impact the development of the future. Say for example, suppose that we are putting a factory. मान के चलो एक फैक्ट्री हम लगा रहे हैं। Obviously factory will emit pollutants, but those pollutants will not impact us today, but after 100 years, after 200 years, our next generation may be the resultant of the pollutants that we have emitted. They will face it. So the clean form of development is called sustainable development. Clear? So easy form of development and also the clean form of development is also represented as sustainable development. And sustainable development is being accepted by something called United Nations Organization. ठीक है ना? ये concept जो है sustainable development है, इसको accept किया कौन? United Nations Organization. और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सो व्हेन वी स्पीक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देयर आर मेनी ample of areas that are to be covered under this particular concept. But when you get a title in this regard, ठीक है ना, मान के चलो मान के चलो आपका सीधा पूछ रहा है टाइटल, मान के चलो सपोज दैट दे आर गिविंग अ टाइटल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड फॉर प्रोटेक्टिंग अर्थ। ठीक है ना? कुछ इस तरह से टाइटल आ गया आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड फॉर प्रोटेक्टिंग अर्थ। इफ दिस ऑल्सो कम्स, देन डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यू पीपल विल बी एंटरिंग इनटू द एरिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, the concept of sustainable development was given for the first time by Harlan Brundtland in 1987. ठीक है ना? ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हु? हार्लन ब्रुंटलैंड इन 1987. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई विल जस्ट लेट यू नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है
It was very very focused in something called Earth Summit. क्या कहते हैं? Earth Summit. Earth Summit was held for the first time in 1990s, that is at a place called Rio de Janeiro in Brazil. किधर हुआ था? Rio de Janeiro in Brazil. And the concept is, all the world countries have gathered together, have come together to discuss on a common agenda, to discuss on a common subject known as sustainable development. And there were no legal sanctions put upon in the first Earth Summit that was held at Rio de Janeiro, a very important place. In fact, that was also the place where the 2016 Olympics were held. Where will the Olympics will be held in 2020? सोचना जरा, ठीक है? In 2020, where will the Olympics be held? Keep thinking. Okay, so Rio de Janeiro. And the legal binding, एक चीज ध्यान रखना, most of the countries, for the pollutant or for the pollution emissions, most of the countries will blame the countries like USA and UK. Why? In fact, Xi Jinping last night, the president of China, have announced that USA is responsible for coronavirus. How can this be possible? So just try to relate with your own sense of thinking as such. Because see, United States of America and United Kingdom are the first industrialized countries in the world. Meaning, the concept of cotton industries and other forms of industries, the machineries, etc., were used for the very first time in USA and UK. The concept of industrial revolution, in fact, began in these two nations. Way back in 1700s, the concept of industrialization began in USA and UK. And they have emitted pollutants. And that pollutants, they are not being the cause for today. They are not facing the problem today. But since they emitted 200, 300 years back, it's India, it's China, it's Korea, every other countries are facing the difficulty because of the pollution that emitted 200 to 300 years ago by the developed countries like USA and UK. And that's the reason we all the time blame USA and UK for something bad happening to the climate action in the contemporary times. So I want you people to connect it in this particular angle. And the 1990s Earth Summit did not give any legal sanction. But in the same 1990s, that is approximately in the year 1997, again the world countries have met for the first time to discuss on a common agenda called climate action. That is at a place called Kyoto in Japan. किधर हुआ था summit ये? Kyoto in Japan. And in this Kyoto, Japan, there was a declaration signed here known as Kyoto Protocol. क्या बोलते हैं उसको? Kyoto Protocol. And Kyoto Protocol is something whereby we will be having the concept of developed countries, developing countries and least developed countries. क्या बोलते हैं इसको? Developed countries, developing countries and least developed countries. Meaning, Kyoto Protocol have announced that the country whatever is developed, the developed countries, since the developed countries are the major reason for the climatic changes that happen today, the developed countries should give certain financial assistance to the developing and underdeveloped countries. Clear? The developed countries should give a financial support to the developing and underdeveloped or the least developed countries. But when we discuss this particular concept, Kyoto Protocol is highly considered to be a failure protocol, though its idea is good, but the implementation was not good because in Kyoto Protocol, two countries called USA and UK, these two countries are not the signatories of Kyoto Protocol. And that's the reason Kyoto Protocol is considered not to be a successful event anymore. Because we have left असली चोर जो है उनको छोड़ दिए हम. They are the real thieves, USA and UK, but they are not the signatories for the Kyoto Protocol. And that's the reason Kyoto Protocol is not considered to be a very, very successful event as such. Later on,
the United Nations organization have given certain dreams, certain targets that are to be achieved by almost all the countries. And that are the targets which are known as something known as MDG. क्या बोलते हैं उसको? MDG, Millennium Development Goals. And these Millennium Development Goals were totally 8 goals which have completed in the year 2015. मतलब हर देश को ये MDG जो है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, 8 गोल्स होते हैं इसमें, जैसे एलिमिनेशन ऑफ सम डिसीजेस, क्लीनिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, इस तरह से पूरा 8 गोल्स होते हैं इसके अंदर. ये सारा 8 गोल्स कब तक अचीव करना था? 2015 तक. 2015 के बाद यही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक और गोल्स को लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं SDG. क्या बोलते हैं उसको? SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ये सारे ही देश को, पूरा कितना गोल्स होते हैं SDGs? 17 होते हैं. पूरा कितना गोल्स है उसमें? 17 गोल्स. MDG कितना था? 8 goals. Sustainable development goals कितना है? 17 goals. And these 17 goals are to be achieved by the year 2030. कब तक अचीव करना है इसको? 2030 तक इसे अचीव करना होगा. By the year 2030, these sustainable development goals are to be achieved by each and every nation. And according to the performance of India presently, another important point, just try to understand one thing. What I want you people to more and more stress upon in this particular essay writing is something connected with the very important COP summits. ठीक है ना, जो कि COP summit बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जिसे बोलते हैं. COP समिट्स जो कि स्कॉटलैंड में हो रहा है, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में हो रहा है, ठीक है. ये COP समिट्स पे भी आप थोड़ा सा इस essay को कनेक्ट कर सकते हो. At the same time, you can also connect it with something very important known as Paris Summit. इससे भी आप connect कर सकते हैं, ठीक है. Paris Summit is also one another event where you people can connect it with. What is Paris Summit? Paris Summit was held in the year 2015. It is also the summit on climate action, or it is also summit on climate changes. So this particular Paris Summit, where we have again the concept of developed countries, developing countries, and the least developed countries. So at that moment, Prime Minister of India Narendra Modi have announced one important concept, that is a concept called CBDR. क्या बोलते हैं इसको? CBDR, that is combined but differentiated responsibility. क्या बोलते हैं उसे? CBDR यानी combined but differentiated responsibility. और एक चीज था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, INDC यानी intended nationally development कॉरपोरेशन करके, ठीक है, INDC करके एक इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, INDC, ठीक है. इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर समथिंग विच आई वांट यू पीपल टू मोर एंड मोर focus upon. INDC is something and CBDR is something. CBDR मतलब combined but differentiated responsibility is something which I want you people to more and more highlight upon. At the same time, the सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को पूरा अब हम किस तरह से, ठीक है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पूरा कितना गोल्स है? टोटल गोल्स आर 17. और एक रिपोर्ट है इंडिया का जिसमें 13 रिपोर्ट्स में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, 13 रिकमेंडेशंस या फिर 13 गोल्स वी हैव बीन अचीविंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउट ऑफ द टोटल 17 गोल्स, ठीक है ना. और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यदि इसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं हम? एक तो है BS4 से सीधा शिफ्ट ले रहे हैं हम BS6 का, ठीक है, इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है. दैट कैन बी ऑल्सो एडेड फ्रॉम भारत स्टेज नॉर्म्स 4 टू भारत स्टेज नॉर्म 6. वॉट एवर इज द इसका इम्पैक्ट पेट्रोल व्हीकल्स के कैसा रहेगा, डीजल व्हीकल्स पे कैसा रहेगा, दैट ऑल्सो आई वॉन्ट यू पीपल टू ऐड. और इंडिया का जो भी सोलार प्लांट पे हम काम कर रहे हैं, सोलर पावर जनरेशन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना. इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो कोट समथिंग कॉल्ड ISA इधर, ठीक है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर्स खुद गुरुग्राम है, ठीक है, गुरुग्राम
the Gurgaon में है the headquarters of International Solar Alliance. That is in fact one of the key recommendation given by Paris Summit to establish International Solar Alliance, which is going to provide solar power within India. और एक चीज़, we are less depending on the traditional pollution emitted fuel types like thermal power पे हम कम कम डिपेंडेंट रह रहे हैं, ठीक है. उसी के साथ वी कैन ऑल्सो गो फॉर सम अदर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल न्यूक्लियर एनर्जी विच इज कंप्लीटली considered as a clean form of energy, though it is dangerous but it is also regarded to be the clean form of energy. इसको भी आप इसी में ऐड कर सकते हो. Then at the same time the state which is performing better in sustainable development is the state called केरला, ठीक है ना. केरला जैसे एक केस स्टडी को, एक मॉडल को आप आपका एस्से में ऐड कर सकते हो ताकि you can also continue writing with respect to all the other possible events that are connected with the sustainable development. And देखिए CAPF एग्जामिनेशन में एक टॉपिक तो कम से कम एनवायरनमेंट से आना ही है, ठीक है. एनवायरनमेंट से कोई भी टॉपिक आने दीजिएगा, आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक समथिंग इनबिल्ट, ठीक है. इनबिल्ट का मतलब समथिंग रेडीमेड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड. एंड व्हेनेवर यू सी एनी टाइटल विथ रिलेटेड टू द अर्थ, द प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह का कोई भी टाइटल देखेगा, आपको सोचना नहीं है, सीधा लिखना है, ठीक है. आपको इसीलिए बोल रहा हूँ लिखना है क्योंकि आपको कब लिख पाओगे आप? ओनली व्हेन यू हैव अ रेडीमेड इनबिल्ट कंटेंट विद इन योर ब्रेन्स. And seeing the title, I don't want you people to spend 10 minutes or 5 minutes in thinking what has to be written. No, that's not a good idea. You will always have to make something store in your brain, something store in your mind, and when the title comes, your pen should start quickly, the pen should start immediately. And iska introduction, the main body and conclusion, ठीक है. इन तीनों को एक फ्रेमवर्किंग के लिए आप अलग से 1 मिनट टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट नॉट द मोर देन 1 मिनट टाइम शुड बी स्पेंड फॉर द फ्रेमवर्किंग एसेस. फ्रेमवर्किंग का मतलब क्या? फ्रेमवर्किंग का मतलब वॉट एवर वी हैव इन अवर माइंड वी आर एडजस्टिंग. ये पॉइंट इंट्रो में आएगा, ये पॉइंट मेन बॉडी में आएगा, ये पॉइंट कंक्लूजन में आएगा. लेकिन आप कंटेंट पे ही सोच रहे हो, देन इट इज अ वेरी नेगेटिव कंसर्न ऑल टुगेदर. सो आई होप एनी टाइटल which comes with related to the sustainable development, I hope you people will be able to manage that particular title, and I hope you'll enjoy the writing. आज एक टाइटल लिखना है, आज एक एस्से लिखना है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है. थैंक यू.